Good evening, everyone, and welcome to my live stream. So, we are here continuing our factorization series. So, today, as we can see, we will cover factorization using these two identities. So, we have a cube plus b cube equals to a plus b multiplied to a square minus ab plus b square, and a cube minus b cube equals to a minus b into a square plus ab plus b square. So just like previous identities, we will first derive the identities and then we will see how to solve questions using the identities. Okay? So you might be getting a noise. It is because my fan is making too much noise. So you have to bear with it. It's very hot. Anyways, let's begin. So let's do it for a cube plus b cube. Okay, we'll start with a cube plus b cube. So a cube plus b cube, I can rewrite this a cube plus b cube as a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Okay, and just to balance this plus 3ab into a plus b, we are going to write minus 3ab into a plus b. Okay, so this derivation is a bit tricky, I must admit, than the other derivations and all. So let's go very slowly, step by step. So I have written a cube plus b cube as a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. So this part we have brought so that we can proceed with the question, right? So this part was not originally in the question. So just to balance this out, we have taken out a minus 3ab into a plus b. Okay, now is this part familiar to us? Yes, this is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. So let me put it inside a bracket. So this is what? So this is a plus b whole cube, is it? And then we have 3ab into a plus b. Okay. Now we have we have a plus b whole cube and we have a plus b. That means a plus b whole cube means we have a plus b multiplied to a plus b multiplied to a plus b, right? So out of these two terms, we can take out a plus b as a common term. Okay, so we had, so let me show this in the rough part. So a plus b whole cube is what? A plus b whole cube is a plus b, a plus b, a plus b. Is it visible? Yes. Okay, so out of these three a plus b's, we have taken one a plus b as a common factor. So we are left with these two, a plus b into a plus b, is it? So a plus b into a plus b will be a plus b whole square. Fine. And minus 3ab into a plus b. So this a plus b we have already taken out as common factor and written outside. So we will be left with 3ab. Okay. So let's expand this, a plus b. So what is a plus b whole square? A plus b whole square is a square plus 2ab plus b square, and we have minus 3ab. Fine. So a plus b, and we have two like terms. We have 2ab and we have 3ab, is it? So what is 2 minus 3? 2 minus 3 is minus 1. That means 2ab, and minus 3ab will give us minus ab. So we will rewrite this as a square minus ab plus b square. So this is what we were required to prove, is it? So we can write therefore a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. So I hope this
RR ब्लॉग्स सेड हाय। सर मैं नहीं समझी थर्ड लाइन। थर्ड लाइन कौन सी थर्ड लाइन के बारे में बोल रहे हैं अभी आप? सो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। सो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने रीराइट किया है, ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये जो 3ab इंटू ए प्लस बी का पार्ट है वो हम लोग ने खुद यहाँ पे बिठाया है ताकि प्रॉब्लम को किया जा सके। तो अभी बात ऐसी है कि इसको खुद से तो बिठाया नहीं जा सकता है ना, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए जस्ट उसका नेगेटिव वाला वर्जन ले लिया, -3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, आप अगर क्रॉस चेक करो इसका प्रीवियस स्टेप, अगर इस स्टेप सेकंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप में जाना है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, सो दैट इज़ वाई वी हैव टेकन दीज टू टर्म्स। तो अभी ये बन जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बन जाता है ए प्लस बी होल क्यूब। और ये जो बचा हुआ है 3ab इंटू ए प्लस बी, तो उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब है कि हमारे पास तीन ए प्लस बी है, जो यहाँ पे मैंने रफ में लिखा हुआ है, जैसे कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और यहाँ पे 3ab इंटू ए प्लस बी है, तो इन तीनों में से एक इसको कॉमन लेके बाहर लिख दिया, और जो ये ए प्लस बी है इसको भी कॉमन लेके बाहर लिख दिया। तो बचा क्या, तीन में से एक बाहर लिख दिया तो दो बचेंगे, सो विच इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड -3ab। यहाँ का ए प्लस बी ऑलरेडी बाहर आ चुका है। ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये -3ab पहले से ही है, सो -3ab एंड 2ab गिव्स अस -ab। सो वी हैव ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर -ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो आर ब्लॉग्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। फाइन, सो इन दिस सेम वे यू कैन ट्राई a minus b whole cube. Okay, you can use the identity a cube minus b cube minus 3b and in a similar way. So we'll move to the questions. Thank you so much RR Vlogs। एक बार स्ट्रीम को लाइक करके जाइएगा मतलब आप बैठ भी सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ओके, सो एग्जाम्पल्स, factorize। So we have x cube plus 64। Thank you RR Vlogs। मुख्तार, Mukhtar said hi. Hi Mukhtar, how are you? Okay, so we have x cube and 64. Okay, so in this type of questions we have to see whether we have a perfect cube or not. Okay, so 64 is a cube of 4 times, I mean 4 into 4 is 64. So we can rewrite this as x cube, x whole cube plus 4 whole cube. So this is exactly in the form of a cube plus b cube, is it? So we can write x plus 3, sorry, not x plus 3, x plus 4, okay? And then we have a square minus ab plus b square, that means we have to write x whole square minus x into 4, or you may write 4 into x, whatever you may write. So I am writing 4 into x. Okay, just one thing. So whenever we are using variables, right, x and all, so just to avoid confusion between x and the multiplication size, we can use a dot। हम लोग डॉट लगा सकते हैं, अदरवाइज मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है कि दोनों
मल्टीप्लाई साइन जैसा ही लगेगा. ओके, सो आई एम अवॉइडिंग दैट एंड आई एम यूजिंग अ डॉट. ओके, so our answer will be x plus 4, x square minus 4x. 4 into x is 4x and 4 whole square is 16. So this is our answer. So these questions are very easy. I have been saying repeatedly the same thing from the last 3 live streams. This once you get used to with the identities, the factorization becomes very easy. Okay. So let's try one with the negative sign. Let me take a new page. Okay. Let me adjust the visibility of my notebook. Okay, so just for you, I am just showing the book that I have been using. So this is Mathematics by R.S. Agarwal and Veena Agarwal. So this is the older version of the book, so the cover may look different. So factorize. In some books you may find FACTORIZE. In some books you will find SE. Both are correct spelling, okay? Don't get confused. Okay, so we have 8a cube minus 27b cube. So 8, is it a perfect cube? Yes. 2 cube is 8 and 3 cube is 27. So very easy. So we'll rewrite this as 2a whole cube minus 3b whole cube. Okay, so this is the we have a negative sign, so we need to be careful while writing the identity. So this is my 2a minus 3b. Okay, then we have 2a whole square plus 2a into 3b and plus 3b whole square. So our answer will be 2a minus 3b. So what is 2a whole square? This is 4a square. 2a into 3b. So 2 into 3 is 6. A into b is ab. And 3b whole square is 9b square. Okay. Let's try one more. 1 minus 64. Excuse me. 1 minus 64 a cube. Rohit Raj Singh says hello. Hello, Rohit Raj Singh. So 64 is 4 cube. So we will write this as 4a whole cube. Okay. So again, this is the one with negative sign. So 1 minus 4a, 1 whole square, minus 1 into 4a plus 4a whole square. So our answer will be 1 minus 4a. 1 whole square is 1 minus 4a plus 16a square. Sorry, this is positive sign. Extremely sorry.
Okay, so our answer will be 1 minus 4a multiplied by 1 plus 4a plus 16a square. Okay, so let's move to a bit complicated, not that complicated. Everything is easy when you know the identities well. So we have 2a to the power 7 or a raised to the power 7 minus 128a. ठीक है. Now at the first look यहाँ पे कुछ भी perfect नहीं लग रहा ना. We don't have any perfect cube. But what we can do, we can take out common factors. Okay, so 2 is a common factor in both the terms, is it? And then we have a to the power 7 and we have a. So what we can do, we can take out 2a as a common factor. Okay, so if we take out 2a as a common factor, we will be left with a to the power 6 and then we have 64. ठीक है, আমাৰ ওচৰত থাকিব a to the power 6 minus 64. Okay, now these two terms can be written in the form of cubes. So 2a, so how we can write? We can write a to the power 6 as a square whole cube. Okay, and then 64, as we have already seen, can be written as 4 whole cube, is it? So 2a, so we'll have a square, since this is a identity with the negative sign, we'll have a square minus 4. Okay, and then we have a square whole square plus a square into 4 plus 4 whole square. So 2a, a square minus 4, and we have a to the power 4 plus 4a square plus 16. Okay, but this problem can be solved further because we have a square minus 4. Okay, so this can be again factorized using another identity. Let me write the identity at the top. Just give me a minute. Okay, so we have an identity a square minus b square equals to a plus b into a minus b. So this is just a rough work. Okay, this is not a part of the solution. So we will write a square minus 4. We will write it as a whole square minus 2 whole square. Okay, the a to the power 4 plus 4a square plus 16. So our final answer will be 2a. So a whole square minus 2 whole square, so this will be a plus 2, a minus 2, and a to the power 4 plus 4a square plus 16. Okay, so moving on, let me adjust my notebook.
what was the previous question? Previous question was number 3. Okay, so number 4, a cube minus 2 root over 2 b cube. Okay, we'll factorize this one. Okay, let's start. So a cube can be very nicely and very conveniently written as a whole cube. But what about this one? Is it? So let's see. Suppose I am giving you this number 8. Okay, if you do the prime factorization of 8, what will you get? 2, 4, 2 and 2. Okay, so what is root over 8? Root over 8 is actually root over sorry. Okay, so this is root over so we can write root over 8 as 2 root over 2, is it? Or let me just give me a minute. Abdul Rahman Juwale. Hello, sir. Hello, Abdul. I hope I'm pronouncing your name correctly. Abdul Rahman Juwale. And Lily says hi. Hi, Lily. Thanks for joining my live stream. Thanks to both Abdul Rahman and Lily. Anyways, so let's continue with this. Okay, I'm just this part is not needed for this solution. Okay, I will just explain it in a simpler way. Just ignore this. Okay, so we have root 2 root 2 b cube, is it? So a cube can be very nicely, like I said, very nicely and conveniently written as a cube. Okay, now what about this? So we can write, just observe. Okay, root over 2 and root over 2. I'm multiplying this. Okay, so root over, basically this is what, this is root over 2 whole cube, is not it? Okay, so what is this? What is root over 2 into root over 2? Root over 2 into root over 2 is 2. And is this correct? Okay, so can we write, if this is correct, can we write 2 root 2 b cube as
रूट ओवर 2b होल क्यूब। ठीक है, कैन वी राइट? वी कैन राइट। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट वंस अगेन। सो root 2 multiplied by root 2 multiplied by root 2. Okay, so this is basically root 2 into root 2 gives us 2 and the remaining root 2. So root 2 into root 2 into root 2 is root 2 whole cube. So this 2 root 2 b cube is written as root 2 b whole cube. So we have the identity with negative sign, so we can proceed. So we will have a minus root over 2b and then a whole square plus a into root over 2b and plus root over 2b whole square. So our answer will be a minus root over 2b a square plus a into root 2 into b will give us root 2 ab and then root 2b square is 2b square. Okay. Fighter sir class. Oh, okay, fighter. I'm just mispronouncing it. Fighter says class 11 CBSE maths. ज़रूर करेंगे, we'll definitely do. प्रथमेश, हेलो प्रथमेश। क्रिक ट्यूबर, अरे बहुत आसान है ये तो बच्चों। हाँ तो आसान ही है, मैंने कब कहा हार्ड है, ये तो बहुत इजी है। एंड रिजुल नॉस्टैल्जिक, यस, ये तो सब नॉस्टैल्जिया ही लगता है, जब बच्चे थे तब तो बहुत हार्ड लगता था, है ना। एनीवेज, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन माय लाइव स्ट्रीम। प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी जी, क्रिक ट्यूबर एकदम बढ़िया। आप क्रिकेट का कुछ करते हैं क्या? क्रिक ट्यूबर, क्रिकेट रिलेटेड कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं? मार्क जोन, फ़िलहाल तो मैं अभी क्लास 9 क्लास 10 के ही ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जी जी जी, आपका ही मैं आंसर दे रहा हूँ। अभी मैं एकदम स्पेसिफिक क्लास 9 और क्लास 10 का जो मैथ्स है, इनफैक्ट मैं क्लास 10 का वीडियो बनाने के लिए भी टाइम मेरे पास शॉर्ट हो रहा है, तो फिलहाल तो मैं बस क्लास 9 का फोकस कर रहा हूँ। हाँ जी, एक बार डाली थी बहुत अच्छी, लेकिन हटा दी। हाँ हाँ, ये तो कॉपीराइट का वो सब लग ही जाता है ना, बहुत केयरफुल होना पड़ता है। अच्छा, बात करते करते और एक कर लेते हैं फिर। x raised to the power 6 minus y raised to the power 6। लिली, इतने स्वीट सर हो, माय गॉड। भाई एक ही वीडियो से कैसे पता चल गया स्वीट हो या कड़वा? एनीवेज थैंक्स। क्रिक ट्यूबर जी बोल रहे हैं कि 3K+ व्यूज़ आ गए थे उस पर एक दिन में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अल्पना मिश्रा सेड हाय। हाय अल्पना मिश्रा। और आप सबको बहुत बहुत थैंक्स जुड़ने के लिए। एक बार लाइक ज़रूर करके जाइएगा स्ट्रीम को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों पर। एनीवेज, x to the power 6 एंड y to the power 6, तो इसको क्यूब फॉर्म में लिख लेते हैं। विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। सो दिस विल बी x स्क्वायर होल क्यूब माइनस y स्क्वायर होल क्यूब। या फिर क्या और एक काम किया जा सकता है इसको, आई थिंक दैट विल बी ईजियर ना। इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको x क्यूब होल स्क्वायर लिख लेते हैं एंड y क्यूब
whole square लिख देते हैं. Then we can factorize this using a square minus b square identity, right? So a square minus b square is a plus b into a minus b. So in that case this will be x cube plus y cube, और ये बन जाएगा x cube minus y cube. So in this question we have to use both the identities here. Okay, so this is going to be a long solution. So what is x cube plus y cube? X cube plus y cube is x plus y x square minus xy plus y square, and then ये होगा x minus y x square plus xy plus y square. So थोड़ा अरेंज कर लेंगे. So we'll arrange this a little bit. So okay, so this will be our answer. So 31 minutes. Okay, so we'll stream for another 10-15 minutes. Let's see और क्या क्या किया जा सकता है इसमें. Okay, this looks interesting. So let me adjust my notebook a little bit. So we have a cube plus b cube plus a plus b. लिली थर्ड लाइन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है आपने? थर्ड लाइन. ओके, 1 2 3. अच्छा ये वाला. एक मिनट, मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ. तो मैं स्टार्टिंग से एक बार बता देता हूँ आपको. सो पहले मैं कुछ और करने जा रहा था. मैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब करने जा रहा था, बट मैंने देखा कि इसको उल्टा करके भी किया जा सकता है. Okay, so what I did, x cube whole square minus y cube whole square. So this is basically a square minus b square identity. So a square minus b square is a plus b into a minus b. So इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a plus b into a minus b. ठीक है. Anyways, so next question is a cube plus b cube plus a plus b. ठीक है. So a cube plus b cube, very clearly we can use the a cube plus b cube identity. So इसको लिख लेंगे a plus b a square minus ab plus b square. ओके, प्लस जो बचा हुआ a plus b है, we'll write it as a plus b. इसको डेकोरेट करके we can put this inside a bracket. Okay, so now among these two, इन दोनों के बीच में we can take a plus b as a common factor. तो common factor a plus b लिख लेते हैं, and then from this expression we will have a square minus ab plus b square, and यहाँ पे a plus b था, so हमें a plus b तो बाहर लिख लो, a plus b को हमने बाहर लिख दिया, so इसके जगह में बच जाएगा 1. So this will be our answer.
Okay, I'm taking a new page for a new question. Factorize 2x plus 3y whole cube minus 2x minus 3y whole cube. Okay, let me check the question once again. 2x plus 3y whole cube minus 2x minus 3y whole cube. Okay, now इसको अगर हम ऐसे करने जाएंगे ना, so our question will be very long, बहुत बड़ा हो जाएगा, because this you can just imagine how big it is going to be, right? So हम लोग क्या कर लेंगे इसको, we will make it little bit छोटा. Okay, so let 2x plus 3y equals to a, okay, and 2x minus 3y equals to b. Okay, now if we rewrite this expression, so this expression becomes what? Therefore we can write a cube minus b cube. We'll replace 2x plus 3y with a and 2x minus 3y by b. Okay, so what is a cube minus b cube? A cube minus b cube is a minus b, a square minus ab, sorry, plus ab plus b square. Okay, now we will replace a and b with these values. Okay, so let's begin by replacing the values. A, what is a? A is 2x plus 3y. Okay, minus, what is b? 2x minus 3y. Okay, then a square. A square is 2x plus 3y whole square plus ab. A is 2x plus 3y. Is it visible? Let me just adjust the okay, now this should be visible. So AB, so instead of, in place of A we will write 2x plus 3y, and in place of B we will write 2x minus 3y. Okay, and then B square. यहाँ पे जगह नहीं है, so I am writing on a new line. Usually it should be written in a single straight line. Okay, so 2x minus 3y whole square. Okay, so this is 2x plus 3y, और ये माइनस बाहर वेट कर रहा है टू बी मल्टीप्लाइड to each of the terms. So minus in 2x is minus 2x, and minus 3y will become plus 3y, and the positive 2x and negative 2x will get cancelled out. Okay, then we have 2x plus 3y whole square. So I am using a plus b whole square identity, so I am going to write the values straight away. Okay, so a square, that means 4x square plus 2ab, that means 2 into 2x into 3y, so 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12xy, and 3y whole square will be 9y square. Okay, then we have 2x plus 3y into 2x minus 3y. So this is using the identity a plus b into a minus b. So a plus b into a minus b becomes a square minus b square. So this will be 4x square minus 9y square. Okay, and then 2x minus 3y. So this will be 4x square minus 12xy and plus 9y square.
I am just avoiding one more step and I have written the value directly. Okay, so let's see, this 12xy and minus 12xy will get cancelled out, is it? And then anything else? Yes, plus 9y square and minus 9y square will get cancelled out, is it? Okay, so we'll rewrite this. So we have 3y and 3y. So 3y and 3y is how much? 6y. 6y. And we have 4x square. Okay, we have 4x square. 4x square. 4 into 4 plus 4 plus 4. We have 12x square. Great. And then anything else? 4, 4, 4 and 9y square. Okay. 9y square. Okay. So can any more factors be taken out? कुछ और लिया जा सकता है यहाँ से? Yes, yes, very well. We can take 3 as a common factor, no? भाई सो जाओ, इतना रात को कौन पढ़ेगा? सही है भाई, सो जाइए आप. गुड नाइट नईम खान. So 6y multiplied by 3. So we'll have 4x square plus 3y square. So our final answer will be 18y 4x square plus 3y square. Okay. अरे नहीं, ही इज नॉट बीइंग रूड. ओके, वो ऐसे ही टांग खींच रहे सबकी. Revanth is saying waste bro you want. अरे let it be, let him comment, we'll do our thing. Okay, so we'll do one more and then we'll wrap up today's thing. It's already late, right? लीनियर इक्वेशंस पढ़ाओगे क्या भैया? ज़रूर 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 पढ़ाओगे, क्यों नहीं. अरे जिनको सोना है सो जाइए, जिनको पढ़ना है पढ़िए. क्या है भाई? हाँ हाँ, कोई बट सुबह कराऊंगा तो बच्चे ज़्यादातर स्कूल में रहते हैं ना, सो और टाइम भी नहीं मिलता करने के लिए. अरे नो इश्यूज रेवन, आई एम जस्ट सेइंग. सुबह पढ़ाने का मन होता है बट द थिंग इज़ कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल में रहते हैं ना, सो सुबह का टाइम मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा. या आई गॉट इट समझ गया. अरे नो इश्यूज कोई प्रॉब्लम नहीं. सर इन लोगों को आप मुझे खुद भी तो उठना होगा 4 बजे पढ़ाने के लिए. नहीं ठीक है, एक्चुअली मैं भी आई वाज कंसिडरिंग टू टेक अनदर टाइम स्लॉट, क्योंकि ये ज़्यादा लेट हो जाता है बच्चों के लिए. आई कैन रिलेट.
आपका मैसेज लिली आके फिर आप मैसेज रीड मतलब डिलीट क्यों हो जाता है आपका बार बार? मैं तो पढ़ ही लेता हूँ आपका मैसेज। जी हाँ रेवंत, मैं मैथ्स का ही टीचर हूँ। आप कहाँ से हैं रेवंत? आयुष आयुष ओके, आपका सरनेम में शायद गलत गलत प्रोनाउंस ना कर लूँ। तो आयुष एक काम कीजिएगा, ये लाइव स्ट्रीम ख़त्म होते ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप एक बार वीडियो चेक कर सकते हैं। और मैं पिछले कई दिनों से ये फैक्टराइजेशन ही कर रहा हूँ अलग अलग आइडेंटिटीज़ लेके, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, रेवंत हैदराबाद से, ओके ओके, तो मैं तो आपके हैदराबाद से बहुत दूर हूँ। लास्ट वाला सर वो 2x-3y कुछ गलत लिख दिया मैंने, तो पॉजिटिव नहीं। 2x-3y को पॉजिटिव नहीं बना देगा। नो नो, आई डोंट नो तेलुगु। मैं हूँ असम से। आसाम के डिब्रूगढ़ सिटी से हूँ, डिब्रूगढ़, DIBRUGARH। जी नहीं, मुझे तेलुगु नहीं आती है। माई मदर टंग इज़ एसमीज। अहोमिया, यस अहोमिया। आई एम जस्ट वंडरिंग व्हाट रवि, लवी नॉट रवि, ओके। सर वो -2x-3y को पॉजिटिव नहीं बना देगा। Find 5 rational numbers between 3/5 and 8/7. आयुष भाई ये आई अंडरस्टूड, बट ये वो पॉजिटिव नहीं कर सकते, राइट? वी हैव टू, ये क्यूब बैठा हुआ ना ऊपर, तो ये उसको बनाने नहीं देगा इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करके ही इसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। बट लाइक एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई सेड ना, इसको यहाँ से करने जाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो उसको अवॉइड ही करते हैं हम लोग। हाँ, इसको बना पॉजिटिव बनेगा, इसको अगर पहले a-b होल क्यूब से इसको ब्रेक करके उसका पूरा फॉर्म लिख लेते हैं, फिर एक एक करके जो ये माइनस है ये सबको, अगर अंदर कोई पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। बट इफ़ इट इज़ इन दिस फॉर्म उसको नहीं बनाया जा सकता। CBUM cubes 2 + 2, हाँ 2 + 2 22, यस। वो तो सबको पता है ना, 2 + 2 22 होता है। एनीवेज, तो आयुष, सो यू वांट मी टू सॉल्व दिस, और आप कुछ पूछ रहे हैं कि आई डिडंट गेट इट। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 8/, आप बताइए सॉल्व करके। 3/5 और 8/7, ठीक है। So let's see if any more questions are left for the day, or I will wrap up today's live stream. So we'll continue this tomorrow. Let's see what identities can be done. I think there are two to three more identities that are to be covered. So we'll try to cover them within this week.
Okay, then we should wrap up today's stream. It's already very late ना, एंड कोई लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं सो जाने के लिए, तो सो ही जाते हैं. एनीवेज, jokes apart, thanks to all my viewers for joining in today. And once this stream ends, the video will get uploaded. If you have any doubts, you can just refer to the video, and you can, if it is fine, अगर सब समझ में आता है तब ठीक है, तब भी कमेंट कीजिए. कुछ पूछना है तब भी आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स एंड टुडेज stream, and thank you to each one of you for joining. Bye bye everyone, and good night.